All are fine. So today we will discuss about chemical properties of alkene. First one, chemical property beta. Here reactant will be alkenes. Reactant will be alkane, and we will get number of products by reacting with other reagents. Okay. So first one we will discuss addition of hydrogen halide. Hydrogen halide means, students, reactant we are having alkene. Reactant we are having alkene. We will add hydrogen halide means HX. X means fluorine. It may be hydrogen chloride, maybe hydrogen chloride, hydrogen bromide, or it may be hydrogen iodide. If I talk about reactivity order, then students, hydrogen iodide, this will be more reactive. Why it is? Due to more bond length of the iodine. Down the group size increases. If size increases, means bond length increases. And if bond length increases, you know very well, na, bond strength decreases. So it can break easily. Okay. So this will be more reactive than this, and this will be the least reactive here. So we will see reaction of alkene with hydrogen halide. Then what product we will get, we will discuss about that today. Let us consider we are having an alkene, this smallest alkene we are having here, CH2. This is ethene. If we want to react hydrogen chloride, hydrogen halide, here we are having hydrogen chloride. Students, simple reaction it is. You will break one bond. Between carbon and carbon. To one carbon you will attach hydrogen, and at other carbon you will attach halogen. Means you will get alkyl halide, or you can say haloalkane. Here halo group is chloro. So chloro and alkane is ethane. Means haloalkane you are getting. But students, if you are having symmetrical alkene means, if you are having symmetrical alkene मीन कार्बन बॉन्ड के दोनों ही तरफ अगर सेम ग्रुप है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, एल्कीन की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड की बात करेंगे हम यहाँ. ओके. तो इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इस साइड भी सेम ही ग्रुप है. मीन्स ये कैसी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है. तो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं सोचना, जस्ट एक को हाइड्रोजन देना है और एक को हमने हेलोजन दिया, और हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया क्लोरो इथेन. मीन्स हेलो एल्केन हमें मिल जाएगा. बट स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, यहां पर देखो ये एल्कीन मींस डबल बॉन्ड पर हम काम करेंगे. तो यहाँ डबल बॉन्ड के इस साइड इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 ग्रुप अटैच है, बट इस कार्बन के साथ दोनों ही हाइड्रोजन है. तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है. यहाँ दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी. बट यहाँ ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक CH3 है, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है. तो ये कार्बन क्या है? हमारी अनसिमेट्रिकल. ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. इस केस में हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि किसके साथ हमने हाइड्रोजन देना है और किसको हमने हेलोजन देना है.
ओके। अब यहाँ पर हमने रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन हैलाइड से, तो हम क्लोरीन से या हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं। अब ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ तो सिमेट्रिकल थे, हमने एक को हाइड्रोजन दिया एक को हेलोजन दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि हम किसको हाइड्रोजन देंगे और किसको क्या देंगे, हेलोजन देंगे। देन स्टूडेंट देयर इज अ रूल, दैट इज द मार्कोनी-कॉस रूल। रूल इज द Markovnikov rule. This is the important rule. Markovnikov rule. What is the rule, beta? This rule states that we will attach more electronegative element will be attached at that carbon which is having less number of hydrogen, which is having less number of hydrogen. हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को उस कार्बन से अटैच करेंगे जिस कार्बन पर कम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब पिक्चर क्लियर है अपने पास। यहाँ ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है। हमने डबली बॉन्डेड कार्बन्स को देखना है, तो यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसका दूसरा बॉन्ड तो सी से बना है भाई, CH3। ये तो इस कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, ये तो इस कार्बन के हाइड्रोजन हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कार्बन के साथ केवल एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उस कार्बन पर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर HCl में H एंड Cl आपने लिया है, तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। Cl इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Cl इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Clear? Then what will you do? You will attach. First you will break bond. Yes. Single bond now it is. So which is having less number of hydrogen, you will attach more electronegative element to that. Chlorine is more electronegative. Yes. So you will attach chlorine to this and hydrogen to this. Clear or not? Yes. Why it is? स्टूडेंट्स जब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हाँ हमने ये ठीक किया है। क्लियर। एक्चुअली व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, एल्कीन आपके पास है, एल्कीन, यू आर हैविंग एल्कीन। दूसरा आपके पास क्या है, HCl। यू नो वेरी वेल क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, सो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, it will attract electron towards itself. Okay, then students some positive charge attained by this one and some negative by this one. Now students this hydrogen has some deficiency of electron, it behave like the electrophile, this hydrogen. So from here we can break hydrogen and from here hydrogen will get break. So this hydrogen need electron now. Electrophilic it is, so it is known as electrophile because it is positively charged species, deficient species it is. Then student from where it can take electron? From where it can take electron? Double bond, pi electrons.
Okay, then students, what will happen? It will polarize this one bond. It will polarize this one bond because इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड क्या होगा? इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ, किस पर भी, या तो इस पर शिफ्ट होगा या इस पर शिफ्ट होगा, या दोनों ही हमारी सिमेट्रिकल हैं, तो किसी एक पर भी शिफ्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां अगर शिफ्ट हुआ तो होगा क्या? ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दिस। मान लो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट हुए, क्योंकि शिफ्ट किसके प्रेजेंस में हुआ? इसके प्रेजेंस में। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, इसने गेन किया और इसने क्या किया? लॉज। सो पॉजिटिव चार्ज है। देन स्टूडेंट व्हाट विल हैपन? दिस H पॉजिटिव will take electron from this one, then we will get C H H positive, C H H H, positive negative attract. Clear or not? Yes. And this negative also present in solution. This negative also present in solution. Then it will attach with this one in second step. In first step, addition of H positive taking place. Okay. In first step, only this one. This is carbocation formation take place in first step. Carbocation. This is the slow step. Slow step. And you know students, slow step is the rate determining step, RDS. This is rate determining step. Clear? In rate determining step, addition of electrophile taking place. That's why it is known as electrophilic addition reaction. Now, simply in second step, chloride ion by electrostatic attraction, they attract and they form final compound. This is the fast step. This is the fast step. Clear or not? So rate of reaction will depend on this step only. क्लियर? एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे। एल्कीन आपके पास है, आपने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई। हाइड्रोजन हैलाइड में हैलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिससे ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, मींस जो कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो जिससे हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? तो यहाँ हाइड्रोजन अब एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वेयर इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन। पॉसिबिलिटी कहाँ है? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कार्बन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, या तो इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे या इस कार्बन पर। हमने मान लिया इस कार्बन पर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इसने लूज किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये H पॉजिटिव and this negative, they will make bond with each other, then we will get this one. So formation of carbocation take place, and this is the slow step. This is the slow step. So this is the rate determining step. In this addition of electrophile take place, that's why this reaction known as electrophilic addition reaction. In second step, firstly chloride ion attach. Clear? This is the mechanism. Now try to understand. If you are having unsymmetrical alkene, this you are having unsymmetrical alkene. Clear? In same way, H positive ions from hydrogen chloride, they need electron. They need electron. Then students, it will polarize this one bond. Either electron can shift here, or second possibility, because both are carbons now beta, electron can shift at this one also. Yes or not? If electron shift on this one, then CH3 CH, it is losing positive charge, it is gaining negative, CH2 negative. Okay, second possibility, CH3 electrons gained by this one, negative here, and it is losing positive here. Then
If negative here, then this hydrogen will form bond with this one. If it will form bond with this one, then CH3 CH plus CH3. Either this one carbocation formation take place, or if negative here, then it will attach here and formation CH2 CH2 positive. Means students, we have two possibilities. We have two possibilities. जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा कि भी HCl जो आपका है ये पोलराइज है, पोलर कंपाउंड है, हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारी इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन यहाँ पर होती है. तो इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके प्रेजेंस में ये इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा इसको. तो यहाँ से होगा क्या, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुए तो यहाँ कार्बन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और इसने गेन किए तो यहाँ क्या आया, नेगेटिव चार्ज. तो ये हाइड्रोजन इससे आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये स्पीसीज मिलेगी. क्लियर. दूसरी पॉसिबिलिटी कि जरूरी नहीं कि इसी कार्बन पर जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन पर भी जा सकते हैं. ओके, अगर ये इस कार्बन पर जाएंगे तो नेगेटिव यहाँ, और इसने लूज किया तो पॉजिटिव यहाँ, और हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, अब इससे अटैच होगा. क्लियर. Now you can see these are the carbocations. This is the secondary 2-degree carbocation. 2-degree carbocation. Clear? And this one is the 1-degree carbocation. And you know very well, students, 2-degree is more stable as compared to the 1-degree carbocation. Clear? So you will go with this one. This is the secondary carbocation. Now in second step, addition of chloride take place, and finally you get CHCl CH3. This one product also you will get. You will also get this one, but this will be the minor product. This will be the minor product. This will be the minor product. And this is the major product. Clear or not? This will be the major product. So students, if you have unsymmetrical alkene, then according to Marconi-Coase rule, the carbon which have lesser number of hydrogen, you will attach more electronegative element. Clear? That will be the major product, and second one will be the minor product. Second one will be the minor product. Any doubt in this? This is major and this is minor. Clear? Product you can write very simple. If symmetrical, then you will give one hydrogen to one carbon and halogen to other carbon. Double bond you will break simply. If you are having unsymmetrical alkene, then according to Marconi-Coase rule, the carbon which having, या तो हम ये कहें जिस पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन अटैच है उसी पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे, या तो आप इस वजह से लर्न करें. But according to Marconi-Coase rule, the carbon which is having lesser number of hydrogen, you will attach more electronegative element to that carbon. Clear or not? Yes. But students, if you are having unsymmetrical alkene, and you are doing reaction with hydrogen bromide, if in simple way you are doing without any absence, then
you will follow Markovnikov's rule. This carbon having less number of hydrogen, so bromine attached to this one and hydrogen attached to this one. But students, if you are doing this reaction in presence of peroxide, like benzoyl peroxide, if we are having, then students, we will follow anti-Markovnikov's rule. Means we will attach more electronegative element to that carbon which having more number of hydrogen and hydrogen to others. Try to understand. अगर आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करवानी है, ध्यान रहे कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, अगर पेरोक्साइड गिवन नहीं है तो आप पहले वाला ही रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिकोव रूल को ही आप फॉलो करेंगे। जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप अटैच करेंगे। बट अगर रिएक्शन आपने करवाई है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, देन आप क्या करेंगे, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, यू विल फॉलो एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या है कि उससे जस्ट उल्टा, जिसके पास यहाँ इसके पास कम हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोजन दोगे, हेलोजन अब आप किसको दोगे एंटी में, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, which has more number of hydrogen, you will attach halogen to that, or we can say more electronegative element to that. This one is clear or not? This is known as anti-Markovnikov's rule. It is also known as peroxide effect. It is also known as cross effect. Students, actually what will happen here, mechanism, in that we were following the mechanism electrophilic addition, but here mechanism will be free radical. Free radical mechanism will be followed here. Try to understand. First of all, you are having peroxide. See, this is peroxide. C6H5, C double bond O, C double bond O, C double bond O, C6H5. This is the benzoyl peroxide. You know very well, in case of free radical mechanism, there will be 3 steps. First one is the initiation. Initiation means generation of the electrophile. Students, in presence of sunlight, what will happen here? Homolytic cleavage. So homolytic cleavage, both are oxygen. So this bond can be break easily. Both electronegativity same. 1 electron, this one take, 1 this one. Then you will see here C6H5, C double bond O. This is having 1 electron, same will form here 2 unit. It is clear or not? Any doubt in this one? Now, this is not stable. This is highly unstable, beta. It can further decompose. It is highly unstable. Then what will happen? C6H5. Try to understand this one. C double bond O free radical. This will further decompose.
From where? Further homolytic cleavage. Both bond between carbon to carbon, you all know na? Then what will happen? C6H5, it will gain its electron. Clear? And this C double bond O free radical, and this electron also having, these two electron can form bond, and this is CO2. This is CO2. Try to understand this one. Here C6H5, ये जो इनके बीच बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो C6H5 फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। और यहां से इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन के पास, इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन ने इनके साथ क्या किया? बॉन्ड। तो अब क्या, किसकी प्रोडक्शन हुई? कार्बन डाइऑक्साइड की। 2 यूनिट्स थी, यू वर हैविंग 2 यूनिट्स ना, 2 यूनिट्स थी, तो आपके पास क्या बनेगा? 2C6H5 फ्री रेडिकल प्लस 2CO2। एनी डाउट? यस। अभी तक हमारा इनिशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि हमने ब्रोमाइड फ्री रेडिकल चाहिए। हमें क्या चाहिए? ब्रोमाइड फ्री रेडिकल। तो यहाँ अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल। तो ये अपने पास जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपने लिया था, रिएक्शन में आपने क्या किया था? आपके पास अल्कीन था और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। पहले अभी तक काम किसका था? इस पेरोक्साइड का। अब पिक्चर में कौन आएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपके पास है, ये इसको ब्रेक करेगा, तो फिर से होमोलिटिक क्लीवेज, फ्री रेडिकल है तो होमोलिटिक। इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Br के पास एक इलेक्ट्रॉन, H फ्री रेडिकल और C6H5, ये क्या बना लेंगे? C6H6, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये बॉन्ड बना लेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच। ऑलरेडी 5 हाइड्रोजन हैं, ओके, सो 1 मोर हाइड्रोजन आपका और अटैच होगा, तो अब क्या बन गया? C6H6। और बेंजीन क्या है? स्टेबल, बेंजीन स्टेबल है, प्लस एक फ्री रेडिकल की क्या होगी यहाँ पे? ब्रोमीन फ्री रेडिकल की जनरेशन, जिसका हम अभी तक वेट में थे, जिसके वेट में थे अभी। ओके, तो अभी हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हुआ, इनिशिएशन कंप्लीट हुआ। ध्यान से, पहले फ्री हमारे पास था बेंजोइल पेरोक्साइड, ये इसकी होमोलिटिक क्लीवेज से हमारे पास ये पेरोक्साइड मिला, बट ये क्या है? अब सॉरी, ये हमें फ्री रेडिकल मिला, बट ये अनस्टेबल है, ये फर्दर डिकम्पोज होगा, जिससे इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने यहाँ, तो यहाँ से फिनाइल फ्री रेडिकल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। फिनाइल जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, ये रिएक्शन करेगा किससे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, इसको ब्रेक करेगा, तो ये इस हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, ये हमारा फिनाइल और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? बेंजीन, और यहाँ से जो हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये बन जाएगा। एनी डाउट इन इनिशिएशन? यस। तो सेकंड क्या होता है आपका? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में आप क्या करते हो? मोर फ्री रेडिकल की जनरेशन करते हैं, एंड अपने फाइनल प्रोडक्ट तक भी हमें पहुंचना होता है। ओके, सो अब ये फ्री रेडिकल, अभी यही काम हमने करना था कि ब्रोमाइड बनाना था, तो अब आपके पास है एल्कीन। यहां से समझना जरूरी है, आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये भी क्या है? हाईली अनरिएक्टिव है। ओके, सॉरी हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या है हमारा? हाईली रिएक्टिव। सो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसे कहां से मिल सकता है वो आप देखो, फिर से ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास। यू आर हैविंग 2 पॉसिबिलिटी, या तो सॉरी होमोलिटिक क्लीवेज होगी ना, तो या हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो होगा क्या? CH3 CH, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, एक मिनट,
CH3 CH CH2, इसने एक अपना इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। क्लियर? होमोलिटिक क्लीवेज आपने करवा दी। अब ये ब्रोमीन था बेचारा, ब्रोमीन को तो जहां से भी मिलेगा इलेक्ट्रॉन उसी पर जाकर अटैच हो जाएगा। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल या तो इससे अटैच करवा दो या इससे करवा दो, किसी से भी करवा सकते हैं। बट अब आप समझेंगे कि हम किससे करवाएंगे। CH3 मान लो आपने इसके साथ करवा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ने और किस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, Br। CH2 और ये फ्री रेडिकल एज इट इज है, ये फ्री रेडिकल। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, CH3 ये वाला बनाए, इस कार्बन के साथ इस इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाए, तो CH फ्री रेडिकल ये एज इट इज और ये CH2 Br। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और ये जो आपका फ्री रेडिकल है, दिस वन इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल and this one is the 1 degree free radical. Which one is more stable? Secondary. So this one is the more stable. This one is the more stable. If this one is more stable, so bromine attached to that carbon which is having more number of the hydrogen. Clear or not? And the hydrogen also, because in reaction mixtures H free radicals also available, so hydrogen now will attach this one. So CH3 CH2 CH2 Br. Now you can see here this hydrocarbon is having more hydrogen and we are attaching electronegative element to this one. Okay, so this is the anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule states that more electronegative element will be attached to that carbon which is having more number of the hydrogen. It is also known as peroxide effect. Why it is due to peroxide? Mechanism changed. Now it is following the free radical mechanism, and during mechanism we are saying here secondary free radical and primary free radical are producing, but secondary is more stable. That's why this one is the major product here. Clear? In termination you can do, next step you can do, because we have reached at our desirable product now. Clear or not? Yes. Anti-Markovnikov's rule, also known as peroxide effect, also known as Cross effect. Clear or not? So today we have discussed about Markovnikov's rule, जो अपने आप में क्वेश्चंस है, anti-Markovnikov's rule, Cross effect, peroxide effect, and reaction also. Clear? Any doubt in this? So thank you. Have a nice day. कितने व्यूज हैं? 20 दिखाना कल ट्राई करो।